Good morning students, my name is Suvas Vora. So today start with the new lab experiment, switch gear and protection systems. The lab experiment aim is to study the protection scheme for the different abnormal conditions in the alternator. So as we know that what is the main role of the alternator in our power systems. So alternator is the connect with the generators and the alternator so that the generations process. So if any fault in the generator, so there are the big problem in our power system, so that we can protect the alternator. So nowadays the modern electrical power system consists of the several parts: alternators, then transformer, station bus bar, then transmission line and other equipment. It becomes necessary to protect every and each part of the electrical power system for the fault which may occur sooner or later, because these all parts are very important role in our power system. If any failure in our system, so they have the lot of the damages of the equipment and the lot of the waste of money. So it is very profitable by using the protective relay for the improper behavior of the system, which can be detected by sensing the relay easily. So that the most serious fault on the alternator which require the attentions on the immediate basis are the stator winding faults. So the basic system for the protections of the alternator is very differential relay scheme. Before the differential nature of measurement make the system much more sensitive and reliable than the other protective system. So basically the alternator have look like here, and they have basically the two main protection system and failures and faults in the alternator. First one is the mechanical protections and electrical protections. So which type of faults will be protections will be given to the mechanical parts. The first one is the failure of prime mover. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर है, अगर बेयरिंग डैमेज हो जाएगी तो वो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर होगा. देन आफ्टर द फेलियर ऑफ फील्ड, यानी कि जो वाइंडिंग है, जो स्टेटर वाइंडिंग है, वो अगर फेल हो जाए तो भी हम जानते हैं कि फील्ड में वाइंडिंग फेल होने की वजह से कौन कौन सी वजह से, तो फर्स्ट वन इज़ दी फेस टू फेस वोल्ट है, यानी कि टू वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है. वाइंडिंग अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाए तो अर्थिंग का प्रॉब्लम है. तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इन द फील्ड्स. नाउ द ओवर करंट रिले. ओवर करंट रिले हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि ओवर करंट कब जनरेट होगा. ओवर करंट मीन्स कि अगर लोड बढ़ जाएगा तो कंज्यूम द मोर पावर्स, और जब लोड कम हो जाएगा तब ज़्यादा जनरेशन होगा. तो दिस टू both the conditions will be overcurrent, and the failure of the winding and the system is also the overcurrent process system. Now the overspeeding. Overspeeding means कि अगर लोड बढ़ जाएगा तो the load is consume the more power. लोड क्या होगा कि जब बढ़ जाता है तो लोड अपने सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए मोर पावर कंज्यूम करेगा. मोर पावर के लिए मोर करंट की रिक्वायरमेंट होगी, और मोर करंट के लिए वी नो दैट दी मूवर को फास्ट घुमाना पड़ता है, तो ओवर स्पीडिंग हो जाती है. और ओवर स्पीडिंग में कई बार डैमेज हो जाता है या एक्सप्लोर हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज़ दी ओवर वोल्टेज सिस्टम्स. सो एंड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस में बेसिकली अनबैलेंस लोडिंग का मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है. सो दीज आर द फॉल्ट इन द ऑल्टरनेटर्स. नाउ स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, द फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर. So when the input to the prime mover moves the fields, at that time the alternator runs as the synchronous motor and draw the some current from the provided supply, and this condition is called the inverted running. यानी कि अगर प्राइम मूवर फेल हो जाएगा
तो अल्टरनेटर बिहेव लाइक द सिंक्रोनस मोटर्स एंड ड्रॉ फ्रॉम द सम करंट फ्रॉम द प्रोवाइडेड सप्लाई, यानी कि कुछ करंट वो अपने में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इन्वर्टेड रनिंग, यानी कि जनरेटिंग की जगह वो करंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा. सो दीज आर द फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर्स. नाउ द फेलियर ऑफ द फील्ड. So the chances of the field failure are very undoubtedly very rare because but if it occurs it can damage the alternator because the field है if the alternator runs without providing the field supply, the faulty alternator can be easily separate manually and not provide the automatic system for the separations, यानी कि वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एक फील्ड जो है वो फेल हो जाती है तो प्राइम मूवर अपने आप कहीं कोई भी डायरेक्शंस में घूमता है और डैमेज हो जाता है. देन आफ्टर द ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स. सो दिस टाइप ऑफ फॉल्ट्स अकर्स मेनली ड्यू टू द प्रैक्टिकल breakdowns of the winding insulator or due to the overloaded to the supply system. Sometimes the overprotections for the alternator is unnecessarily due to the some reasons. The first reason is the modern nowadays the alternator winding are with the high impedance so that they stand the complete short circuit at their terminal for the sufficient time and then it can be easily separate manually. And the disadvantage of using of the overload relay for the protections of the alternator is that such a protections might disconnect the alternator from the bus bar on momentary troubles outside, so it is disrupts the continuous of the power to the consumers. Then after the overspeeding, जो जैसे ही मैंने बताया the main cause of the overspeeding is sudden loss of the high amount of load disconnecting from the alternator, and so far that the purpose the mechanical centrifugal device is mounted on the driving the shaft to trip the main values of the prime mover and the dangerous overspeed is occurs. अगर प्राइम मूवर फेल हो जाता है तो ओवर स्पीडिंग होगा और ओवर स्पीडिंग की वजह से कई बार स्टेटर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग भी डैमेज हो जाती है. नाउ द ओवर वोल्टेज द फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम इज वेरी वेल डिजाइन बट nowadays so that it can be provide the overloading but ओवर वोल्टेज में occurs due to the overspeeding of the prime mover. अब स्पीड बढ़ाने के लिए वोल्टेज ज़्यादा करे की रिक्वायरमेंट रहेगी. So overspeeding of the alternator reason is sudden loss of the hug amount of load disconnecting, and if some mechanical system is installed on the moving shaft of the alternator then it can be controlled easily. यानी कि स्पीड कंट्रोल के लिए अब मैकेनिकली और कंट्रोलिंग इजी हो जाए ऐसे मैकेनिज्म वहाँ पे रख देंगे. सो unbalanced loading means the failure of any phase. So unbalanced loading means the different phase current in the alternator and another one is the single phasing system, यानी कि अगर एक फेज फेल हो जाए तो the difference current conditions occurs in the alternator due to the earth fault between the phases or fault phase between the phases. So the unbalanced loading, if it is allowed to persist, it can be burn the winding or may damage the mechanical fixing. So these are the fault of the alternator. Now what is the protections is given to the system. So for the unbalanced loading protections we can provide the unbalanced loading systems. So unbalanced loading में हमने देखा कि जो 3 फेज सिस्टम है उसमें कोई एक फेज का जो बैलेंसिंग 2 फेज़ का जो करंट है वो चेंज हो जाए यानी कि अनबैलेंस हो जाए. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आर वाई बी तीनों फेज़ में इंडिविजुअली सिटीज़ कनेक्ट करते हैं एंड दिस सिटीज़ इज कनेक्टेड विथ द रिले कॉइल. नाउ हियर यू कैन सी दैट एंड द रिले कॉइल इज कनेक्ट विथ द ट्रिप सर्किट्स.
सो इफ़ एनी सिटीज़ इज़ मोर करंट, यानी कि दो सिटीज़ में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से द रिले कॉइल एनर्जाइज होगी एंड दिस plungers is close to the circuit and the given to the trip signal for the circuit breaker and open our power system. So these are the unbalanced loading protection systems. Then differential protection systems. So in the differential protection system में हम जनरली यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ पे ऑल्टरनेटर वाइंडिंग या जनरेटर वाइंडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि दोनों साइड सिटीज़ कनेक्ट करेंगे और जो पायलट वायर है उसके पैरेलल में हम ऑपरेटिंग कॉइल रख देंगे. नाउ जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस ये दो पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो इंटरनल फॉल्ट्स के लिए और दूसरा अर्थ रेजिस्टेंस यानी कि अर्थ फॉल्ट के लिए. अगर अर्थ फॉल्ट या इंटरनल फॉल्ट्स होगा तो द एंटरिंग करंट एंड द एक्सिट करंट ऑफ द सिटीज विल बी differs and that at that time the R1 and R2 will be open and the relay will trip the circuit breakers. So these are the differential protection systems. Now balance earth fault protection system. earth fault protection system में जैसे में आगे हमने देखा कि दो सिटीज़ होगी, अगर अर्थ फॉल्ट होगा यानी कि इंटरनल अर्थ फॉल्ट सिस्टम है होगा यानी कि फेस टू अर्थ फॉल्ट होता है, तब जो रिले कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगी एंड दिस प्लंजर इज क्लोज टू द सर्किट एंड गिवन टू द सर्किट ब्रेकर टू द सिग्नल्स to trip the circuits. If the external fault is arise at that time, the earth resistance will be increased and उसकी वजह से जो जनरेटर में इंक्रीज होगा तो cities and entering cities and the exit sitting will be differs and relay will be also energized, relay coil is also energized and the trip circuit will be operate. So now these are the basic protections is applied in the alternator. Basically the unbalanced loading, then after differential protections and the balanced earth fault protections. Basic three protections is given to the alternator. And the last one is जैसे ही हमने देखा कि अल्टरनेटर में जो वाइंडिंग फेस टू फेस हो जाता है उसको बोलते हैं इंटरटर्न्स फॉल्ट्स. एंड इंटरटर्न फॉल्ट्स के लिए हम इस तरह का कनेक्शंस करते हैं जहाँ पे दोनों टर्न्स के बीच में सिटीज़ रख देते हैं. इफ़ एनी इंटरटर्न फेलियर्स यानी कि दो वाइंडिंग के बीच में फेलियर हो जाएगा तब द रिले कॉइल विल बी ऑपरेटिंग ऑफ द सर्किट गिवन टू द डिफरेंस बिटवीन द RC एंड OC यानी कि रिस्ट्रेनिंग कॉइल एंड द ऑपरेटिंग कॉइल एंड गिवन टू द ट्रिपिंग सिग्नल फ्रॉम द circuit breaker. So these are the protections against the interturn faults. If any query regarding this topic, you can contact me. If any questions regarding this topic or experiment, mail me. My mail ID and the contact number is in your screen.